when you're sitting on a table and you're actually, you have to throw ideas and you have to challenge ideas on the other side. Initially जो मेरे बच्चे थे उनको प्रॉब्लम थी. यूएस के लोग भी अब आप टॉप कंपनीज अगर उठा के देख लें, उनका इनोवेटर बहुत सारी कंपनियों का डेनिश होता है. आपके अंदर जुस्तजू और मसले सॉल्व करने का जो वो आइडिया है वो तभी आता है कि व्हेन यू फेस प्रॉब्लम्स, राइट. पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में आके इनोवेशन करना या डिज़ाइन थिंकिंग करना वो टफ है. Assalamu alaikum everyone. I am Wasif Hussain. I'm your host for this series called Tangent. Where we're talking about design and innovation and creativity. And today we have a really appropriate guest for this series because he not only understands value creation, innovation, but he also, is really interested in product design, and he happens to be an executive level person and running a tech business in Pakistan. Assalamu alaikum Tanzeel. अस्सलामुअलैकुम. कैसे हैं आप? आई एम गुड जी, थैंक यू वेरी मच. हाउ आर यू? मैं भी ठीक हूँ. मैंने कहीं इंट्रोडक्शन में कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी क्योंकि आप नहीं, बिल्कुल, it's fine. If you want, I can just get into it right away. Yeah, sure. Please go ahead. Tanzeel Rehman is my name. I run a company by the name of Virtual Force, in which we actually kind of position ourselves as the ideal of the software world, right? Okay. That was the main concept how we started it. ठीक है. It has been working primarily with some early to growth stage startups to do their product innovation, mainly in the software side. And along with that, there's another company that we run, which is called Qualitatum, which is a specialized company for software testing, quality assurance, and cybersecurity. That's a quick intro. Generally आप अपने काम से ही intro करवाते हैं, which is unfortunate, but where we are at, there's definitely a long journey behind that. नहीं, डेफिनेटली. और थोड़ा सा हमारा एक ट्रेडिशन सा बिल्ड हो गया. आई ट्राई टू टेक द गेस्ट अ फ्यू ईयर्स बैक कि जहाँ पे उनसे मैं पूछता हूँ कि पहली जॉब के बारे में बताएं या हाउ डिड यू एंड अप इन दिस डोमेन फील्ड. वो थोड़ी सी अगर आप जर्नी बताएंगे तो आई थिंक Sure. बी नाइस. So पहली जॉब से भी पहले मे बी मेरी स्कूलिंग जो है वो so I have had a diverse experience in life. Alhamdulillah, my journey started from I went to a Fauji school, cadet college Hassan Abdal में मैंने शुरू में पढ़ाई की, and then from there I went to LUMS. It was a drastically different cultural experience, but I think both of those experiences kind of contributed to my overall understanding of how the world operates and my own thinking process. In LUMS, and like I was like theta kind of student, I was able to do some very strong programming and all that. So when I graduated, I was able to land a company where initially I started my work as an engineer working in the industrial automation domain. It was a Texas based company जो industrial automation की domain के अंदर काम कर रही थी. लाहौर में उनका एक ऑफिस था. That's where I landed right after LUMS in 2006. कुछ अर्सा वहाँ पे काम किया, but then I used the word that I got corrupted, but actually it was more exposure that was given to me, and I was kind of pushed towards the domain of sales and marketing for the same company. They had built a completely new innovative product in the domain of industrial automation, and I was positioned to do its marketing and sales. That experience allowed me to go travel the world. I had a region of Southeast Asia given to me where I was just taking that flag of that particular product, going and reaching out to executives, meeting them, and trying to sell that product, which was doing something completely innovative for the industrial world, which hadn't been done till that time. और वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा. उसमें कुछ अर्सा I worked on that for a few years, but then I was like might as well do something different, or if I'm selling for somebody else, might build something of your own and sell for yourself. Okay. So that was something that pushed me, and I started a small software development company. At that time, it was a pure
आउटसोर्सिंग शॉप हमने 3-4 लोग खुद ही बैठ के we just started doing software development. We were getting some projects from outside. We were able to scale really really well. We reached a time जहाँ पे मतलब 8-10 लोग हो गए थे, अच्छा रेवेन्यू आ रहा था. But then we went bust as well क्योंकि एक आधा कस्टमर हमें बहुत बड़ा मिला जो who didn't fulfill his payment commitments. And but वो अच्छा था. I mean, this was this gave us those highs and lows of this particular experience. Gave in the end you learn. That's what you say. Yes. And that again, we started off as a Fauji bacha, came to LUMS, got the diversified experience. वहाँ पे जाके हम, although the majors was computer engineering, but I was studying philosophy and human behavior as well because it used to be part of the core. Came out, did some engineering, but then was exposed to sales and marketing. Journey मतलब वो it wasn't intentional और कोई plan नहीं था, लेकिन it allowed you to have your personality shaped in a manner where you can then become pretty brave that I can kind of take on new challenges and do something different. Really nice, really nice. I think there must be a lot of other things in your skills and your personality, but one thing what you said when you said na कि मैं एक थीटा था और मैंने इस तरह की वो चीज़ की. So owning your identity, whatever even the labels and breaking through those labels, I think that sort of confidence is, at least I can see this person sitting right next to me is not worried about usna ki cheez, so that's why they could power through. I never wanted to break it. I wear that as a badge. I think it's a very strong badge to wear. It's a nerd's world that you're living in right now anyway, right? So लेकिन उसमें फिर I got a break for a bit, and then मौका मिला. I went to I got Fulbright scholarship in 2010-11. So then I went to Babson College, which is kind of known for entrepreneurship studies. It's been top ranked for a while. Or वहाँ जाके the 2 years that I spent in Boston in Babson College, that was that contributed a lot. That exposed me to a lot of new avenues, new world completely. जिसमें mergers and acquisitions, venture funds, how does the startup world work, how the whole VC investment and all that works. That was something that was exposed to me, and that allowed me to reposition myself and then start this company that I'm running right now, Virtual Force, which has been around for a good 10-11 years now. Okay. I would come to you were talking about design thinking and how you were you were thinking के पाकिस्तानी context में कैसे contribute कर सकते हैं, but I would come to it later. एक चीज़ जो जब आप अपना introduction दे रहे थे ना, I was thinking Tanzeel के you got to work as a salesperson or in sales domain, ठीक है, now you're running your own company. Would you say कि जो sales है or the ability to convince clients or convince people to buy into your dream product or services, it's very crucial for a CEO or a founder, having that ability? Sure. I think अगर आप वैसे business world के अंदर historically देखें, typical before the nerds started or the techies started to take over the world, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स सी लेवल होते थे वो सेल से ज़रूर आ रहे होते थे, बिकॉज इन द एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू sell what you've built, right? If you build something and you put it somewhere on the side and you're not able to sell it, it doesn't give any it's really of no use. So selling, understanding the customer is, I think, one of the most important traits. And if you look at the top leaders, right, cliched example Jobs ki aati hai, but he was able to understand how the world is going to change, or what the consumer actually wants. Sahi. And then he was able to present that or put that in the hands of the consumer. So it is I think it's a very key skill. It is a very
important aspect for anyone in the leadership role of a company. Having said that, I think there has to be a balance. Of course, खास तौर पे जो अभी की वर्ल्ड है जिसमें इनोवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्योर सेल्स का बंदा भी नहीं चलेगा. You need सही to है. be very much aligned with ठीक what है. capabilities do you have. ओके, सही, बिल्कुल. बिकॉज आई थिंक जिस तरह आप ये बात कह रहे थे, तो जो सेल्स के लोग हैं उनके पास फिर ये कैपेबिलिटी भी है कि दे डू अंडरस्टैंड यूजर नीड्स एट ऑन डेली बेसिस. दे आर मोर in touch with users. Yeah. बाकी जो domains हैं, they have to either find ways or prototyping or user testing to get that feedback. But salespeople, Could be. It's just that I think the skill that anyone needs is empathy and understanding of the customer. There is a high possibility that some engineers might develop that or have that way better or way more than anyone in the sales. But it's just that the more you are able to interact with people, the more you are able to sit in their or be in their position and wear their shoes, the more exposure you get and you're able to understand कि उनको क्या चाहिए. अगर आप एक गाड़ियों की फैक्ट्री में इंजीनियरिंग साइड पे बैठे हुए हैं और आप टॉप से टॉप चीज़ बना रहे हैं, बट यू आर नॉट रियली गोइंग देयर एंड सीइंग कि दुनिया को क्या चाहिए, तो वो वाली इनपुट आपको दूसरी साइड से ही आएगी. वो आप सिर्फ और सिर्फ एक अपने लैब में बैठ के वो एक्सपोजर नहीं ले सकते. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, sure. Definitely. Okay, so now coming to Virtual Force and your vision for that project and your business, what is that you've been trying to do, and sort of walk us through how did you end up in that? Sure. That vision. So Virtual Force, as I said, we started it from the concept of building an IDEO kind of a venture for the software world. हमें alhamdulillah शुरू में we got to work with some really smart founders. My partner was actually a GP in a venture fund based out of New York, through which we were investing in some startups in the US. And we created a model which is very common now, but we created a model where when we were investing in those startups, we were actually powering them through product development and technology development services as well. This is back in 2013, 2014, a model which you would see very common now, that software companies are coming in as equity partners pretty frequently. But we did that back in 2013, 2014, and it went really well. Through that, we were able to invest in around 40 plus startups based out of the US. And some of them died, some of them are still sailing through, some got good 20-30x valuation multiple as well, and they are still doing really well. And that experience gave us a very strong footing to nurture an engineering powerhouse over here, which could work under the pressure and of working with a high growth startup, cash starved startup, and at the same time building products that are not out there, because most of the startups were building some innovative ideas, they were disrupting. तो उससे हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई एक ऐसी टीम बनाने की जो कि इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम कर सकती है. सही. इन सारे इनोवेटिव आइडियाज़ का जो कोर था वो हमारा डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस था. सही. बिकॉज वी weren't really just building another inventory management software or another point of sale solution or another anything else. ज़्यादातर फाउंडर्स जिनके साथ हम काम कर रहे थे वो एक यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे इन डेप्थ डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड था. So I was in operations. I was heavily involved right in the beginning, where I myself used to lead that along with my other co-founders. And through that, we gave that experience to our team, which was able to adapt to that, and they became really good at that. So a company, trying to find solutions or make solutions using design thinking based out of Pakistan. How hard was it for you to make that pitch abroad and sell right customers के अच्छा यार Pakistan में भी design thinking right. अच्छा, so pitch ये थी ही नहीं.
पिच ये थी कि डिज़ाइन थिंकिंग मैं कर रहा हूँ राइट और मैं ही कर रहा था और मेरे जैसे कुछ और भी थे साथ जो कि जिनको उस वाली दुनिया का एक एक्सपोजर था हमारे पास. Pitching in the earlier days wasn't that difficult. Actually, enabling the team locally was a bit of a challenge, right? Because we've got brilliant people, we've got amazing talent, we've got sharp minds. They can learn really, really fast. Lekin thoda sa, because of a little bit of a lack of exposure, there is a fear. They're a bit scared to run these sort of processes. We are amazing when given certain set of instructions that we need to do the implementations. उसमें तो मेरे ख्याल से जो हमारी साइड की मिट्टी है उसमें कोई कुछ है वो कोई खास एलिमेंट वो तो हम उसमें तो मसला है ही नहीं. लेकिन ये है कि when you're sitting on a table and you're actually you have to throw ideas and you have to challenge ideas on the other side. Initially जो मेरे बच्चे थे उनको problem थी, right? But this is where I was able to, I mean इतना ज़्यादा claim नहीं करना चाहिए, but we were able to create that culture that allowed them to not to be too scared, that allowed them to make those mistakes and come up with ideas, and then वो एक उनके अंदर भी वो strength आ गई. ठीक है. सो अगर मैं डिज़ाइन थिंकिंग में से डिज़ाइन को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखूं और मैं थिंकिंग वाले पार्ट के ऊपर आऊँ, एंड आई आस्क यू वर्किंग इन दिस एनवायरनमेंट इन वर्किंग विद आवर सॉर्ट ऑफ जो हमारी सिचुएशंस हैं या जो भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, हाउ वाज लाइक working with teams and working with हमारा talent. Again, they're amazing people, we're not saying कि वो उस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते दुनिया में हो सकती हैं, but tell me about your experience in terms of our thinking abilities, the people that you've worked with or the people that you've nurtured or you've garnered this sort of culture. तो वो कैसे था thinking abilities के अंदर, कैसे क्या challenges आए and what you challenges काफ़ी आए, और challenges में खाली इसमें देखें कैंडिडेट बात है काफ़ी. अगर हम देखें ना, मैं सो rather than looking at the team that I was trying to nurture or trying to groom, if we start looking inwards on our own journey, right? हम भी जहाँ बैठे हुए हैं, हम भी अगर उसको देखें कि अगर हमें वो वाले डिफरेंट एक्सपीरियंसेस और एक्सपोजर्स ना मिले होते तो प्रॉबली शायद थॉट प्रोसेस आपका भी स्क्यूड होता. Creativity, design thinking requires a lot of आपको फ्राइटन्ड और स्केयर्ड करने वाले जो बैरियर्स लगे हुए होते हैं उनको हटाने से ही वो क्रिएटिविटी बाहर आती है. सही है. You mentioned that the market that you've the country that you've actually studied in, and the market that you've been working in. अब US के लोग भी, अब आप टॉप कंपनीज अगर उठा के देख लें, उनका इनोवेटर बहुत सारी कंपनियों का डेनिश होता है, राइट? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के लोग बहुत ज़्यादा इनोवेशन और डिज़ाइन हेड्स एंड ऑल दैट उन पोजीशंस पे बैठे हुए होते हैं. व्हाई इज़ दैट? ठीक है ना? सो देयर इज़ a 30-40 years of journey that nation has gone through. Yes. That is why they are like that. Why are Germans so strong in making sure that mathematics, engineering, and all that precision ho, right? Italians are not. Yes. Italians are completely different, right? These are certain traits that are shaped in nations over a period of time because of multiple different variables. The circumstances that those nations have gone through, and कुछ उसके अंदर उनको स्टिमुलस भी मिलता रहा है through their leaders or through their governments and all that, which has kind of shaped them in that particular manner. उसमें भी अगर हम देखें तो now if we bring all of that to us, right? हमारे पास भी बहुत, and then on top of it, अगर आप यही चीज़ ले जाएं, कुछ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और इनोवेशन अगर आप देखना चाहें ना, तो वो कर ही नहीं पाते. वजह ये है कि दे आर नॉट रियली एक्सपोज टू द प्रॉब्लम्स, राइट? आपके अंदर
जुस्तजू और मसले सॉल्व करने का जो वो आइडिया है वो तभी आता है कि व्हेन यू फेस प्रॉब्लम्स, राइट? व्हेन यू डोंट फेस प्रॉब्लम्स एट ऑल, then you're not able to think creatively, right? So in that regard, अगर हम अपने नेशन को बाय मतलब कोर में देखें ना, तो हम एक्सट्रीमली क्रिएटिव लोग हैं, राइट? हम एक्सट्रीमली क्रिएटिव लोग हैं. हमें कोई सीधी बात अगर बताता है तो स्ट्रेट ऑन द फेस ऑफ इट हम वो नहीं टेकअप करते. वी वुड जस्ट थिंक व्हाई इज देयर अनदर वे टू डू दिस, एंड आई वांट टू जस्ट राउट ऑल ऑफ दैट एनर्जी टू अ पॉजिटिव साइड. ठीक है ना? उसकी इम्प्लीमेंटेशन नेगेटिव साइड पे ज़्यादा आ जाती है, एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, राइट? बट इटालियंस भी ऐसे हैं. ठीक है ना? आप देखें ना, दुनिया में इतने क्रिएटिव ब्रांड्स एंड ऑल दैट उन्होंने क्यों निकाले हैं? क्योंकि वो जर्मन्स की तरह सीधी लाइन पे नहीं चलते. They were able to think in a different manner. They were able to figure out the corners, and they would actually just come up with some innovative idea around that. So the same thing applies to us. It's just that पढ़ाई ने हमारे लोगों को थोड़ा सा नैरो डाउन कर दिया होता है. हमारी जो थोड़ी सी एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर वो लग जाते हैं, ब्लाइंडर्स लग जाते हैं, and then they are able to not they are still creative, but they are just told not to give their ideas in a free manner, which is something that I think the tech world is doing again. वो barriers को और वो blockers को और blinders को तोड़ रही है. जितनी भी टेक की कंपनीज हैं जो हमारी अभी रिसेंटली भी बनी हैं, हमारे बाद बहुत सारी बनी हैं, they're actually trying to do that, and I see a lot of good work happening left now. I think that's really interesting what you said about for example Italian culture or Danish culture. You were comparing with our culture. First of all, that's a revelation for me, the way you just described कि हमारे culture के अंदर वो जो चीज़ें हैं, because मैं कुछ लोगों से सुनता तो आया हूँ, जो हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, जुगाड़ू लोग हैं, बट अगेन वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है ना. ठीक है. और देन यू ऑल्सो सेड के फॉर एग्जांपल अगर स्कैंडिनेविया को 30-40 या 50 years लगे, बट दे न्यू कि what sort of culture, what sort of approach they have, and then they develop it from there. So maybe we can do something similar कि अगर हम ये चीज़ समझ लें कि अच्छा हम इस तरह के हैं, वी कैन मूव अराउंड. जब प्रॉब्लम्स आते हैं वी कैन थिंक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव एस्पेक्ट. वी जस्ट मे बी नीड टू स्ट्रक्चर इट in our own way according to our own needs and our own problems. So that gave me hope. By structure भी, और दूसरा ये है कि we just need to reassure ourselves that we can do it. Or to be very honest, this is the experiment that I did. I was just able to reassure the team of mine that what you're doing is exactly right. Because when I went and when I was sitting in my MBA class in the number one business, like in the number one school for entrepreneurship in the world, when I used to talk, everyone over there was listening, which means that मुझे आता था और मुझे पता था. I was able to compete with the best of the best. What's stopping you is just that fear. ठीक है, आपको अगर वो अपॉर्चुनिटी मिल गई और आप भी उस टेबल पे आके बैठ गए हैं, देन यू जस्ट हैव टू परफॉर्म, राइट? ना मिली होती फिर एक अलग बात है, बट नाउ व्हेन यू आर वर्किंग, सो लाइक व्हेन माय सॉफ्टवेयर और डिज़ाइन पीपल वर वर्किंग इन बिल्डिंग अ स्टार्टअप, 2 लोग हमारे वैली में बैठे हुए हैं, एक बंदा MIT का ग्रेजुएट है, 5 बंदे की टीम हमारी है. वी आर बिल्डिंग दैट प्रोडक्ट टुगेदर. वी डोंट हैव टू जस्ट absorb all the ideas that they are presenting, right? They were initially just scared that okay, whatever they are saying is probably better and superior, and we don't need to present our idea. We just need to implement that. But that fear in 5 months, 6 months, 8 महीने, 1-2 दफ़ा काम करके वो barriers और blinders हट गए, and then my team was able to run the show as well. And that is probably बाकी सारी चीज़ें तो side पे हैं. That is one of the most important thing that I am really proud of. Okay, I think this is an amazing success. Okay, if you were as a leader, you were able to instill that self belief कि अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं. And then if you created that culture कि हाँ come in here and let's try this thing. Of course failures तो होते हैं, learning curve भी तो होता है. So I think that's a really great success कि you could instill that in your team. Okay, so please tell me now
आई एम रियली इंटरेस्टेड टू लर्न फ्रॉम यू कि वो जो डिज़ाइन थिंकिंग की बात आपने की, अब मैं ये सीखना चाहता हूँ आपसे कि वो एक आपके एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे पिछले 10-12 साल के साथ आप एक चीज़, एक एजेंसी, एक डिज़ाइन फर्म, एक टेक्नोलॉजी फर्म रन कर रहे हैं, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम समथिंग दैट वी स्टडी इन यूरोप और अमेरिका, वो चीज़ें। तो मुझे वो पाकिस्तानी वर्जन को ही आप थोड़ी सी वो इंसाइट्स दे सकते हैं कि हाउ इज़ इट डिफरेंट डिज़ाइन थिंकिंग इन पाकिस्तान, और हाउ यू गाइज आर अप्लाइंग? डिज़ाइन थिंकिंग के कॉन्सेप्ट्स तो एज सच सेम ही हैं, राइट? है। लेकिन डिज़ाइन थिंकिंग का जो मेन कोर चीज़ है वो इट स्टार्ट्स फ्रॉम एम्पैथी, ओके। राइट? व्हेन जिस भी आप रीजन, मार्केट या एंटिटी के लिए डिज़ाइन थिंकिंग कर रहे हैं, सही है। सबसे पहले आपने उसको समझना है ठीक है। और उसी के अराउंड चीज़ें इनोवेट करनी है. सही है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वाई एट टाइम्स कभी कभार जो वेस्टर्न वर्ल्ड या हम जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कर रहे होते हैं और हम लेट्स से हमारा क्लाइंट बेस्ड आउट ऑफ द यूएस है, तो उनके लिए मतलब यहाँ वाले बंदे के लिए एट टाइम्स डिज़ाइन और इनोवेट उधर के लिए करना चैलेंजिंग होता है क्योंकि उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की हुई है. समबडी इन द यूएस इज़ प्रॉब्ली एक्सपीरियंसिंग द प्रॉब्लम इन द हेल्थ केयर सिस्टम, how the insurances work, how the pharma and the hospitals and the insurance are creating different problems, and they need to come up with an innovative solution for that particular sector. ठीक है। वो हमारे लिए मुश्किल है जिस बंदे ने टाइम ही नहीं लगाया. सही है। मैं उस चीज़ के बारे में सोच सकता हूँ क्योंकि मैंने सही है। यूएस के अंदर टाइम लगाया हुआ है, ठीक है। राइट? सिमिलरली किसी और के लिए पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में आके इनोवेशन करना या डिज़ाइन थिंकिंग करना वो टफ़ है. एंड दैट हैज़ बिन अ डिलेमा क्योंकि कुकी कटर फार्मूला में बहुत सारी चीज़ें जो कि उठा के हम पाकिस्तान में लेके आते हैं वो नहीं चलती. हमने कहा जी वो नाइजीरिया में एम पैसा चल गया, टक करके यहाँ पे लगा दें, मतलब जैज़ कैश, इजी पैसा, 10 साल लग गए उनको, लेकिन अभी भी उनकी वो सक्सेस नहीं है, राइट? देयर आर सर्टन नुआंसेस ऑन द ग्राउंड which are different, which need to be addressed in a manner जो कि localized है, जो कि यहाँ के region के मुताबिक है. So there's definitely a lot of room. There's definitely, there's the process and methodology is somewhat similar, but you have to empathize with the local market and the local mindset and the local consumer, and then build your design around that. Okay, definitely. Okay, so now I think I would love for you to tell us about के ये तो आपने हमने बात की ना डिज़ाइन थिंकिंग की या वैल्यू क्रिएशन की या इनोवेशन की ना, कि हाउ दैट प्रोसेस कुड बी और to innovate. But then you also you have amazing understanding, amazing journey of being a business person as well. ठीक है, तो अगर तो वो आपने इनोवेट कर लिया है, you're able to deliver that as well, but delivering it or scaling it, it's another challenge, it's another ball game. ठीक है, so I would really love for you to tell us कि अच्छा वो कैसा how does that work out, how you've been dealing with that. I mean we're still, amazing and all that words अपने बारे में सुनना थोड़ा सा ज़रा नहीं इतना. I think there's still a long way to go, and there is a lot of learning that is happening on a daily basis for somebody like me as well. लेकिन scaling और business creation, value creation and all that, I think उसकी जो सबसे ज़्यादा core चीज़ है that probably we need to learn a little bit more is being open for collaborations, right? Because if you वो 1 और 1 11 का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है कि 1 जमा 1 2 नहीं होता, 11 होता है literally. And that is something that we've kind of experienced in real life. If the two of us join hands right now, you have that 30 years of different experience all together, right? If that is coupled with my last 30 years of experience, and if we just try and collaborate and work on a common goal, we'll be able to do something way more than what I will in the next 10 years do alone, right? So being open to collaboration is very important. Okay. Being easy to work with each other, that is very important as well. At times we try and be
Very, and that has hurt me as well, by the way. I'm a little bit easy in that regard. लेकिन ये है कि कभी कभार वो कुछ लोग होते हैं जो शुरू में ही ख़त किताबत और पेपर वर्क एंड ऑल दैट एक्सट्रीमली सॉलिड करते हैं कि आप सारे के सारे कॉर्नर केसेस को पहले से ही एड्रेस करना चाहते हैं, राइट? इन वन एस्पेक्ट मे बी करना भी चाहिए, लेकिन दैट at times that process should not be too strenuous that जो initial आपका जो love loss है ना वही इतना ज़्यादा हो जाए कि आप collaboration में आगे जा ही ना पाएँ। आप और मैं आज अगर इरादा बनाते हैं कुछ करने का, हम अगला महीना सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को की नोक पलक सीधे करने में ही लगा देंगे, तो उस डिस्कशन में कुछ ऐसी बहुत सारी बातें हो जाएंगी जो कि हमारे फ्यूचर कोलैबोरेशन की बहुत सारी चीज़ों को वैसे ही रोक देंगी, राइट? बिल्कुल ठीक है. So staying easy to work with each other, that is actually very, very important. Being open to collaborate and not being complacent very, very quickly. हमारे लोग थोड़ा सा बहुत जल्दी छोटी सी सक्सेस के ऊपर easy भी हो जाते हैं. तो अगर हम ये तीन चीज़ें ना करें तो I think there is a lot of room and there is a we can go way ahead. बिल्कुल ठीक है. So in a way you're saying that we can collaborate and make an MCASA together. Sure, we can. Why not? We'll just have to see, okay, we can, but we have to very, very quickly see कि हम किन points पे एक दूसरे के साथ overlap कर रहे हैं, और हम बहुत quickly बड़ी open discussion से वो check कर सकते हैं कि whether we are clicking or whether we are not. And if we are not, then there shouldn't be any hard feelings. We can still go our way. And वो जब शुरू में वो जो म्यूजिक बैंड्स अलग होते थे, दुनिया बड़ी सैड होती थी, लेकिन probably that was the best thing that used to happen to the music industry, right? क्योंकि फिर दोनों लोग मुकाबले में इतना बेहतरीन काम करते थे, अच्छा काम करते थे, ठीक है, लेकिन ये है कि वो कुछ केसेस में वो मतलब तबाही हो जाती है और वो वापस नहीं अच्छा कर पाते. The initial team that we were able to build, that's very important, and that actually starts from the founding team. बहुत सारे लोग अकेले जर्नी स्टार्ट करते हैं. आप अकेले जर्नी स्टार्ट करने में एंड बीइंग अ सोलो लीडर होने के कुछ फ़ायदे भी हैं कि कुछ चीज़ें आप बड़े तेज़ी से विद अ सिंगल माइंडसेट, विद अ सिंगल without any distraction and all that, you are able to inculcate very, very quickly. सही है. लेकिन as a founder you face a lot of challenges and you need somebody to it gets really lonely at the top, right? So if you have one or two who are in the same place with you, you're able to pick each other up. I've been very lucky in that regard. We're three co-founders in the company. We were able to work very, very well. We had completely complementary skills that worked in our advantage, and we were able to, we've seen the highs and lows, of course. They've been challenging times and we've been able to pick each other up during those times. That was number one. And number two, because it was the three of us, we kept pushing ourselves so that we do not get complacent. रज़ाक साहब हमारे एडवाइजरी बोर्ड के अंदर हैं बड़े शुरू से, और उन्होंने एक बात बोली थी कि जब शुरू में पैसे से आना शुरू, उन्होंने कहा कि बस अब गाड़ियाँ शाड़ियाँ लेके इजी ना हो जाना, ठीक है, क्योंकि that happens, right? And we made sure we didn't buy new cars till last three years, I would say. And we were like, जो भी आपको returns आ रहे हैं, might as well invest back into the business and try and grow it. Because if you after a certain time, if you are able to get through that chasm होता है, किताबी बातें सारी अगर मैं करूँ तो वो अगर आप chasm cross कर लेते हैं तो आपकी लाइफ थोड़ी सी ठीक हो जाती है. लेकिन अगर उसी टाइम पे अगर आप री इन्वेस्ट करके बिजनेस को एक्सपैंड नहीं करेंगे तो then you may be able to end up as a floating business, but that hyper growth that you can get as a startup or as a venture, that idea may just stagnate and top people may start leaving you. एक हमारे ऊपर जो एक वैसे मैंने अपने ऊपर जो एक नेचुरल प्रेशर डाला हुआ था वो यही था कि I was building this for myself, but simultaneously
I was trying to retain and sustain the team that I was building, right? अब उनकी अपनी नीड्स और उनकी अपनी ग्रोथ और उनकी अपने जो फाइनेंशियल प्लस इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी आपके साथ साथ बढ़ रही होती है. So if your company is not growing at the speed that you were asking them to grow, then they may just leave you, right? And that was a good motivation for us as well, that to make sure that we are continuously hunting for new types of business, new innovations. We are actually adding more segments to our portfolio. Alhamdulillah, we're working not just with startups, but like with government agencies, with large, we've Fortune 100 customers hain hamare portfolio ke andar. We have an office in Saudi, we have an office in UAE. We have clients all over the world, including US, Saudi, Europe, Denmark में मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे customers हैं, top brands हैं, Australia में भी हैं. So when you are able to provide that sort of an exposure to your own teammates, their own journeys actually continue to evolve, and they can actually evolve into the next leadership, which can just take the reins from your hand and carry the flag forward. So then maybe वो जो आपने वो बात की ना कि एक floating business की stage से आप फिर आगे जाना है, तो it's not just the founders or the executive who are pushing through, and the whole team is pushing through. Yes, of course. And that दिल भी थोड़ा बड़ा करना पड़ता है उसमें. दिल भी ऐसे बड़ा करना पड़ता है कि फाउंडर शुरू में मतलब बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में कंट्रोल करके रखता है ना, कि वो बहुत सारी चीज़ें खुद करना चाहता है और अक्सर जगह पे गलती भी नहीं करना चाहता. और इवन अमंग्स द फाउंडर्स और अमंग द इमीडिएट टीम मेंबर्स, क्योंकि आपको अपने साथ जो टॉप टियर में टीम मेंबर्स चाहिए होते हैं, वो चाहिए होते हैं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाले. बिल्कुल ठीक है. और फिर अगर आप उनको एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का वो साथ उनको चीज़ें भी नहीं देंगे, तो then they'll have to do something else, that has been cultivated, right? So उसके लिए फिर आपको दिल बड़ा करना पड़ता है. You need to start sharing the pie a little bit more, and you need to be open to maybe set up things for them and give more ownership to them, and which may result in certain mistakes, which may result in certain blunders, but you did that in your early days anyway, right? So you would see that happening, which will allow you to make the overall ship bigger. Okay. आप जब अभी पहले बात कर रहे थे ना, आपने कहा कि टीम की भी बात की आपने, और आपने ये कहा ना कि फाउंडर और विजन की उसमें आपने बात की कि आप यू रियली फॉर्चुनेट टू हैव यू 3 people वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल. एक चीज़ मुझे ये बताएं कि वो how do you find the right partners, or how do you align your vision with people of overlapping or complementary skill set? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये, बड़ी दफ़ा मेरे से पूछा गया है, लेकिन मैं वही कहूँ कि इसमें साइंस थोड़ी सी कम ही है. इसमें लक फैक्टर, सारी चीज़ें इन दी एंड लक फैक्टर हो जाती हैं कि जस्ट बीइंग देयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड पोजीशनिंग एंड ऑल दैट. लेकिन वो वही जैसे रोनाल्डो के बारे में कहा जाता था, द ओरिजिनल ब्राज़ीलियन रोनाल्डो, कि उसने इतने स्कोर इसीलिए किए हैं क्योंकि ही वाज जस्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. बट बीइंग at the right place at the right time required that 15 years of training as well, right? तो तभी आप right place पे और right time पे होते हैं. इस particular case में I would say don't be too hasty. जैसे दोनों चीज़ें हैं. Be easy to work with. There are certain things that you would wanna figure out later and compromise on, और इतनी बड़ी challenges नहीं होते. लेकिन values और जो आपका जो मिशन है उसके ऊपर अगर आपकी अलाइनमेंट है, तो बाकी सारी चीज़ें खुद ही से ठीक हो जाती हैं, राइट? इफ़ यू आर अलाइंड ऑन द ओवरऑल वैल्यू सिस्टम एंड द ओवरऑल जो आपका लाइफ मिशन है, उसमें अगर आपको 70% अलाइनमेंट नज़र आती है, देन आई थिंक इट्स अ गो. एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल बी एबल टू pave through as the journey goes. And if it doesn't, you don't have to be stuck in it. You can very easily, on a very good note, in a very nice manner, break up and then start afresh.
And yes, maybe that could mean कि अगर वही if you're aligning on the values, if you're aligning on the mission, तो वो जो बाकी जो टेक्निकल एग्जीक्यूशन या ऑपरेशनल चीज़ें हैं उसमें तो डिसएग्रीमेंट का चीज़ें हो सकती है ना, वो मसला नहीं है. Sometimes in a project or in a task you would have different approach, other people would have different approach, but as long as both of those approaches are delivering results तो शायद वो उतना फ़र्क नहीं है. But what you're saying, I think it's very relevant कि वो वैल्यूज़ अलाइन नहीं होंगी तो शायद वैसी ही बात है कि जैसे जब आपके दोस्त होते हैं या आपका लाइफ पार्टनर है तो वहाँ पे भी वो इसी किस्म के आप ओवरलैप्स ढूंढ रहे होते हैं ना कि सर मैं इसके साथ हैंग आउट करता हूँ, ये मेरा दोस्त है, इसका एक अलग सेंस ऑफ ह्यूमर, इसका एक अलग बैकग्राउंड है, बट दिस इज़ वेयर वी अलाइन ऑन. तो मे बी शायद बीइंग अच्छा उसमें बल्कि ना मैं शायद थोड़ा सा गलत मैसेज चला जाएगा इस लिहाज से उसके अराउंड वेरी वेरी क्विकली आई थिंक चीज़ों को स्ट्रक्चर देना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और बिकॉज अक्सर लोग एक मिस्टेक ये करते हैं कि गुड फ्रेंड्स बिकम फाउंडर्स, राइट, एंड देन दे आर एबल टू दे ट्राई, दे थिंक दैट हम इतने अच्छे दोस्त हैं, हम इतनी सारी चीज़ों में हमारा ओवरलैप है तो हम एज अ फाउंडिंग टीम भी बहुत अच्छा काम परफॉर्म कर लेंगे, बिजनेस भी बहुत अच्छा बिल्ड कर लेंगे. हाँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप कितना क्विकली उस चीज़ को स्ट्रक्चर दे देते हैं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू व्हेन सिटिंग ऑन अ शेयर होल्डर्स मीटिंग as friends, or if you are part of the board and you are actually conducting a board meeting, you conduct a board meeting rather than you sit over there as friends who started a company. It's very important that, और उसमें जो चीज़ थोड़ा सा अर्ली स्टेज में कंपनी में मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप within 2-3 years you add somebody as an external board of director on your board to help you run that process, that helps a lot. और वो चीज़ आप तभी करते हो कि वही जो शुरू वाला जो मैंने आपको कहा था ना, दिल खुला होना चाहिए, ठीक है, और कोलैबोरेशन की अंदर से वो होना चाहिए. या आप अगर कहेंगे कि यार मैं वासिफ को बोर्ड पे बिठा दूंगा तो वासिफ को तो सारा कुछ पता लग जाएगा जो मेरी कंपनी में हो रहा है, राइट. इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट यू विल नॉट इनवाइट. सही है. बट इफ़ यू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि यार अच्छा हम 3 तो दोस्त हैं, लेकिन ही कैन जस्ट कम इन एज एन एक्सटर्नल एडवाइज़र, हेल्प अस रन द बोर्ड in a proper manner, the way a company's board needs to work, and ask tough questions from the CEO. पिछले क्वार्टर में सेल कितनी थी, अभी कितनी सेल हुई है, ठीक है ना. These are the questions जो कि दोस्त आपस में मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन somebody who's heading the board has to ask, right? पिछली दफ़ा आपका एट्रेशन रेट इतना था, अभी एट्रेशन रेट इतना है, राइट. आपने प्रोडक्ट इनोवेशन के ऊपर पिछले साल में इतना पैसा खर्च किया था, उसके रिजल्ट कहाँ हैं, दिखाइए, राइट. उसको ट्रांसलेट कर दिया आपने, फाइनेंशियल टर्म्स में उसको ट्रांसलेट करके दिखाएं. सो दीज आर सर्टन टफ क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आस्क्ड, एंड एट टाइम्स फाउंडर लेड कंपनीज stagnate after that initial success because they don't ask these questions very regularly. And that is where that external help or external structure and all that is very very beneficial. कि वो चीज़ से वो उस सिस्टम से वो आपको ब्रेक अवे करवा सकता है कि अगर फाउंडर खुद ही बैठे हुए हैं या एक ही फाउंडर बैठा हुआ है तो वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, तो देन यू आर सेलिंग इन द सेम डायरेक्शन और सेम उसी चीज़ पे आप जा रहे हैं. और देखिए ये चीज़ मतलब ये तो कोई नई इनोवेशन है ही नहीं है, बिजनेस हमेशा से ऐसे ही चल रहा है, मतलब and that structure needs to be adopted and quickly brought in. Why do we, हमारे जो पाकिस्तान में बहुत सारे फैमिली रन बिजनेसेस हैं, उनकी जो है हाइपर ग्रोथ अब आप देखते हैं कि जब थर्ड जनरेशन आई है तो दे आर एबल टू एक्चुअली गेट दैट. व्हाई इज दैट? बिकॉज दे ब्रॉट इन दैट स्ट्रक्चर, राइट. बिफोर दैट मतलब बशीर दारुल माही, why is Bashir Darul Mahi not as big as McDonald's? What is stopping it, right? मतलब पूरे पाकिस्तान में, आई डोंट नो पूरे पाकिस्तान में है कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट लाहौर में, पंजाब में वो खाई जाती है, ठीक है ना. तो वो उसको 10x 20x करने में इज नो बैरियर एट ऑल. तो बिजनेस केस आज आप लिखना शुरू करें, बड़ा क्लियरली लिखा जाएगा, सही है, ठीक है ना. ऑल यू नीड इज़ दैट स्ट्रक्चर. बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन है, बहुत ज़्यादा लोग इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन से बिजनेस ग्रैब कर रहे होते हैं, एंड वी हैव सीन अदर कंट्रीज, नेशंस डू दैट.
and it has worked for them. Okay. But I am completely, I have a very, very strong opinion about not going in that direction, sticking to the ethical values, sticking to the overall doing a good business value, right? जो आप काम कर रहे हैं वो अच्छा काम होना चाहिए. अच्छे की डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं कि वो आपके लिए अच्छा क्या है, लेकिन एक आई थिंक एक ग्लोबल अच्छे की डेफिनेशन बड़ी क्लियर मौजूद है. इट शुड बी गुड फॉर द इन्वायरमेंट, इट शुड बी गुड फॉर द पीपल, इट शुड बी गुड फॉर, इट शुड नॉट बी क्रिएटिंग अ नेगेटिव वैल्यू फॉर समथिंग और फॉर द प्लैनेट. ओके. और तंजील, क्या ये जो चीज़ आप कह रहे हैं, एथिक्स की बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ ये इंडस्ट्री लेवल पे इम्प्लीमेंट होती है, या सिर्फ ये लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या it also trickles down to managers and teams as well? Everyone, I think every individual, आप छोटी सी एग्जांपल है, मैं दूसरी साइड पे बैठ के एक गलत एग्जांपल देने को, मतलब वो शायद बुरा लगे कुछ लोगों को, लेकिन ये है कि अगर आपका रोज़ा है और आप काम कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट नॉट वर्किंग ड्यूरिंग रमज़ान क्योंकि रोज़ा है, राइट? तो just go and question your own ethics and morality. Am I being paid during Ramzan or not? If I am, then I have a responsibility to honor the work that I took. Right? अगर आप as a business, as a contractor कर रहे होते तो शायद आप छुट्टी कर लेते रमज़ान में, लेकिन एज एन एम्प्लॉई आर यू फुलफिलिंग दैट नीड? ठीक है, दूसरी साइड पे भी वी कैन स्ट्रक्चर थिंग्स अराउंड, वी कैन मेक थिंग्स बेटर एंड ऑल दैट. I'm not doing it, but I'm just giving a very, very small example around that. So it starts at a very basic and core level. So that should be there in whatever you do, in whatever work you're doing. If your job is to just clean this table, and clean this table in the best possible manner, because that is what you are paid for, right? If your job is to lead and be a manager, then be a good manager, right? You cannot really just expect to, at times leaders and managers just become good leaders and managers on a Monday and on a Friday. Rest of the week they do not do anything. And that is why people, and so it is on every particular level. You have to just make sure that every day when you are getting out of work, you say that, okay, was I able to fulfill the requirements of this particular job that I was doing? Whether it is your own business or you're working for somebody else, you have to justify your own presence and your own work through that particular model, I would say. और तंजील, क्या ऐसे है कि ये एक इनर क्लॉक या इनर वॉइस तो हर एक के अंदर होती है ना? मतलब ये इतना मुश्किल तो नहीं है, अगर आप होती है, सबको पता होता है ना कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना. मतलब वो इतना कोई वो तो नहीं है, एज यू सेड, कि कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है वो. आई थिंक ये बचपन से हर कोई पैदा इस चीज़ के साथ ही होता है. इसका ना रिलीजन से कोई ताल्लुक है, ना किसी और चीज़ से कोई ताल्लुक है. बीइंग गुड इज बाय डिफॉल्ट, आई थिंक, पार्ट ऑफ आवर नेचर, एंड वी नीड टू we just probably bury it under some dirt through our actions, and start justifying by doing other things. But in my opinion, that is very important. और sometimes हम जानबूझ के उसको जरा इग्नोर भी कर देते हैं ना, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है ये. Sure. Yeah. Yes, maybe. Yeah. ठीक है. Thank you so much, Tanzeel. Thank you so much for coming in and giving us the insights and talking about your journey as well, and giving those advices. I think जो आपने वो फाउंडिंग वाली बात की, जिस तरीके से आपने बताया कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हो सकती है इनिशियल स्टेज के, आई थिंक दैट वुड बी रियली कंट्रीब्यूटिंग एंड रियली इंफॉर्मेटिव फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग देयर बिजनेसेस. एंड योर जर्नी ओवरऑल, इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर a lot of people here, not just in tech industry but in other industries as well. Sure. Thank you very much for inviting. It was really, I'm glad and I'm happy that I made a really good new friend. So inshallah, not just this podcast, but we'll be able to do some things together. Sure. Thank you so much for saying that, and I would really love to learn more from you. All right. Thank you.